Hi dear students, welcome back to my class. So today in this class I am going to continue the remaining parts of the chapter bones and muscles. So our next topic is ball and socket joint. Let's discuss about it. We will continue it by discussing the topic one by one. Okay, ball and socket joint. A ball and socket joint allows movement in all directions. In this joint, the round ball like part of one bone fits into the cup like cavity of the other bone. The shoulder and hip joint are examples. So this is a ball and socket joint. Why it is known as ball and socket joint? We can see here there is a ball like structure which is fits with the cup like cavity. So this ball like structure is fits with the cup like cavity. That is why this joint is known as ball and socket joint, and because of this direction we can move our leg and hand in every direction, because these two joints, this joint is present in the shoulder and hip. So their examples are shoulder and hip joint, because ball and socket joint allow us to move in every direction. समझ आ रहा है? ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पर होते हैं? शोल्डर एंड हिप में. एंड ये बॉल सॉकेट जॉइंट क्यों कहा जाता है इन्हें? क्योंकि ये ऐसा स्ट्रक्चर कैसा है, एक ऊपर का ओपन खुला हुआ लाइक कप लाइक कैविटी है, कप की तरह है, देन एक राउंडेड बॉल की शेप की तरह कप की कैविटी के साथ फिक्स्ड है. So that is why it is known as ball and socket joint. And the next topic is hinge joint. So just like the hinges of a door, a hinge joint allows movement back and forth. However, unlike the ball and socket joint, it can move in only one direction. Elbows, knees and finger and toes have hinge joint. I think you have seen it in the door. This is the hinge of a door. So just like this, we have a joint which is known as hinge joint, and this joint is present in elbow, knees, fingers and toes have this joint. मतलब ये joint कहाँ कहाँ पर होते हैं? elbows में, knees में, fingers में and toes में, and lastly elbow. I think I have said it. So this joint allow the movement in वन डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है. ये कौन सा जॉइंट? हिंज जॉइंट. लाइक हियर इन फिंगर वी हैव हिंज जॉइंट एंड वी कैन मूव ओनली इन वन डायरेक्शन. वी कैन नॉट मूव अवर फिंगर हियर एंड हियर, इजंट इट? तो हिंज जॉइंट एक ही डायरेक्शन अलाउ करते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव होने को अलाउ करते हैं. एंड नेक्स्ट इज ग्लाइडिंग जॉइंट. Joints that allow bones to glide or slide over each other are called gliding joints. Such joints enables the bones to move back and forth as well as sideways. Bones of the vertebral column and those of the wrist and ankle have gliding joints. So as you can see in the picture, these are the gliding joints. So gliding joints allow bones to glide or slide over each other. मतलब एक दूसरे पे ये अलग ऐसे ऐसे glide कर सकते हैं, मतलब फिसल सकते हैं, as you can see here. So the joint which allow the gliding or slide on each other are known as gliding joints. तो एक दूसरे पे वो फिसल सकते हैं, वो जॉइंट को ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं. यहाँ एज यू कैन सी हियर ऐसे ऐसे स्लाइडिंग होते रहता है जॉइंट्स में. एंड ये जॉइंट कहाँ पर होते हैं? दीज जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन रिस्ट, एंकल एंड ऑल्सो दे आर प्रेजेंट इन द बोन्स ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम. एंड दिस जॉइंट अलाउज द मूवमेंट इन बैक एंड फोर्थ एंड एज वेल एज साइडवेज. मतलब
पीछे बाजू वगैरह अलाउ करता है ये मूव होने के लिए. एंड नेक्स्ट जॉइंट इज पिवोट जॉइंट. Pivot form when the round surface of one bone fits into a ring-like structure formed by another bone is called a pivot joint. This allows the round bone rotate over the ring-like bone in several directions. The joint present in the neck is a pivot joint. So as you can see here in the picture, it is a pivot joint. So this joint is present in the neck. So because of this joint only, our head or face can move in all the direction, like here, but पूरा पीछे तो नहीं कर सकते. All the direction means. So here as you can see, this is a ring like structure and this is another bone and they both are joined together and makes the pivot joint. मतलब यहाँ पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है और ऊपर की एक बोन है, उन दोनों का मतलब जॉइंट होने के बाद ये पिवट जॉइंट बनती है. एंड दिस जॉइंट्स अलाउज मूवमेंट ऑफ मेनी डायरेक्शन एंड दिस इज अ पिवट जॉइंट प्रेजेंट इन नेक.